इस्तांबुल शिपयार्ड पीएनएस खैबर की लॉन्चिंग तकरीब। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान भी वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ इस्तांबुल शिपयार्ड पर पीएनएस खैबर की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। तुर्क सदर के हमरा तीसरे पीएनएस खैबर का इफ्तिताह करेंगे। पीएनएस खैबर के इफ्तिताह से पाक तुर्क दिफाई ताउन मजीद मजबूत होगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को वहां पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तुर्क सदर के हमरा तीसरे पीएनएस खैबर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ वहां पर मौजूद हैं और दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन पर मबनी मिलजम मनसूबा पाकिस्तान तुर्की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। ये बराह रास्त मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तुर्क सदर भी वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा हैं और उन्हें इस वक्त बैज लगाया जा रहा है। तुर्क सदर की जानिब से वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के तकरीब में पहुंचने पर इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जा रहा है। इस्तांबुल शिपयार्ड पर पीएनएस खैबर की लॉन्चिंग तकरीब। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन पर मबनी मिलजम मनसूबा पाकिस्तान तुर्की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। पीएनएस खैबर के इफ्तिताह से पाक तुर्क दिफाई ताउन मजीद मजबूत होगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा तुर्किया का दौरा है और इस वक्त वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ इस्तांबुल शिपयार्ड पर पीएनएस खैबर की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान भी उनके हमरा हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का तकरीब में पहुंचने पर तुर्क सदर की जानिब से इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ वहां पर हाई ऑफिशियल से इस वक्त मुसाफा कर रहे हैं और तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान भी वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा हैं। इससे कबल पाक बहरिया के लिए पहले कॉर्वेट पीएनएस बाबर की लॉन्चिंग तकरीब अगस्त 2021 में इस्तांबुल में ही मुनक्किद हुई थी, जबकि दूसरे जहाज पीएनएस बदर का संग बुनियाद मई 2022 में कराची में रखा गया था। और इस वक्त इस्तांबुल शिपयार्ड पर पीएनएस खैबर की लॉन्चिंग तकरीब जारी है और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ भी इस तकरीब में मौजूद हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान भी उनके हमरा हैं। तुर्क सदर के हमरा तीसरे पीएनएस खैबर का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा तुर्किया पर मौजूद हैं और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्क सदर इज़्ज़त माब जनाब रजब तय्यिप एर्दोगान की दावत पर आला सतह वफ्द के हमरा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया में मौजूद हैं और ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनके हमरा वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब भी हैं और इस वक्त ये तकरीब जारी है। इस्तांबुल शिपयार्ड पर पीएनएस खैबर की लॉन्चिंग तकरीब है ये और पीएनएस खैबर के इफ्तिताह से पाक तुर्क दिफाई ताउन मजीद मजबूत होगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन पर मबनी मिलजम मनसूबा पाकिस्तान तुर्की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है और इससे कबल अगर बात की जाए तो पाक बहरिया के लिए पहले कॉर्वेट पीएनएस बाबर की लॉन्चिंग तकरीब अगस्त 2021 में इस्तांबुल में मुनाकिद हुई थी, जबकि दूसरे जहाज पीएनएस बदर का संग बुनियाद मई 2022 में कराची में रखा गया था और इस वक्त इस्तांबुल शिपयार्ड पर पीएनएस खैबर की लॉन्चिंग तकरीब जारी है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ इस तकरीब में मौजूद हैं। तुर्क सदर भी उनके हमरा हैं और तीसरे पीएनएस खैबर का इफ्तिताह किया जाएगा और इसी हवाले से इस्तांबुल में ये तकरीब मुनाकिद की गई है और पीएनएस खैबर के इफ्तिताह से पाक तुर्क दिफाई ताउन मजीद मजबूत होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी हैं और साथ ही साथ उनके वफ़्द के हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जब अपने वफ़्द के हमरा इस्तांबुल पहुंचे तो उनका गवर्नर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और इस वक्त जो ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इस्तांबुल शिपयार्ड के हैं, जहाँ पर पीएनएस खैबर की लॉन्चिंग तकरीब इस वक्त जारी है और तुर्क सदर के हमरा तीसरे पीएनएस खैबर का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। पीएनएस खैबर के इफ्तिताह से पाक तुर्क दिफाई ताउन मजीद मजबूत होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और अगर हम इस 2 रोज़ा दौरे तुर्किया की बात करें तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वहाँ पर इस वक्त पीएनएस खैबर की लॉन्चिंग तकरीब में इस्तांबुल शिपयार्ड पर मौजूद हैं और तुर्क सदर के हमरा तीसरे पीएनएस खैबर का इफ्तिताह करेंगे। बाद अज़ां दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी करेंगे और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। जबकि इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म तुर्किया की ताजिर बिरादरी के वफ्द और ईसीओ ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक के सदर से भी मुलाकात करेंगे।
استنبول شپ یارڈ پر PNS خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت جاری ہے. آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ تقریب کے مناظر ملاحظہ فرما رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف وفد کے ہمراہ اس تقریب میں موجود ہیں اور ترک صدر کے ہمراہ تیسری PNS خیبر کا افتتاح کریں گے. PNS خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف جیسے ہی شپ یارڈ PNS خیبر کی لانچنگ تقریب میں پہنچے تو ترک صدر کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. ترک صدر کے ہمراہ تیسرے PNS خیبر کے حوالے سے افتتاحی تقریب ہے جس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب میں موجود ہیں اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف رجب طیب اردوان کی دعوت پر اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ میں اس وقت موجود ہیں. اعلیٰ سطح کے تبادلے پاک ترک شراکت داری کا نتیجہ ہیں. PNS خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون Tüfek omuza. Esas duruş. استنبول شپ یارڈ پر PNS خیبر کی لانچنگ تقریب اور دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے. پہلے وزراء بھی تقریب میں شریک ہیں جبکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف رجب طیب اردوان کی دعوت پر اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ 2 روزہ دورے پر ترکیہ میں موجود ہیں. اس وقت استنبول شپ یارڈ پر PNS خیبر کی لانچنگ تقریب جاری ہے. تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانے پیش کیے گئے. جب وزیر اعظم محمد شہباز شریف اپنے وفد کے ہمراہ استنبول شپ یارڈ پر پہنچے تو ترک صدر کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. اس کے بعد تقریب کے آغاز میں دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے. ترک صدر رجب طیب اردوان بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ ہیں. ترک صدر کے ہمراہ تیسرے PNS خیبر کا افتتاح کریں گے. PNS خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا. اعلیٰ سطح تبادلے پاک ترک شراکت کی امتیازی خصوصیت ہیں. براہ راست مناظر یہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے ہمراہ استنبول شپ یارڈ پر PNS خیبر کی لانچنگ تقریب میں موجود ہیں. دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون پر مبنی ملجم منصوبہ پاکستان ترکی اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اگر ماضی کی بات کی جائے تو اس سے قبل پاک بحریہ کے لیے پہلے کاربیٹ PNS بابر کی لانچنگ تقریب اگست 2021 میں استنبول میں منعقد ہوئی، جبکہ دوسرے جہاز PNS بدر کا سنگ بنیاد مئی 2022 میں کراچی میں رکھا گیا اور PNS خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مضبوط ہوگا. ترک صدر کے ہمراہ تیسرے PNS خیبر کا افتتاح وزیر اعظم محمد شہباز شریف کریں گے اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس وقت موجود ہیں ترکیہ کے 2 روزہ دورے پر اور استنبول شپ یارڈ پر PNS خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت جاری ہے. اس 2 روزہ سرکاری دورے میں اگر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مصروفیات کی بات کی جائے تو 2 طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، جبکہ مشترکہ پریس کانفرنس سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترک صدر خطاب بھی کریں گے اور اس دورے کے دوران وزیر اعظم ترکیہ کی تاجر برادری کے وفد اور ECO ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ بینک کے صدر سے ملاقات بھی کریں گے. اس وقت یہ تقریب جاری ہے. استنبول شپ یارڈ پر PNS خیبر کی لانچنگ تقریب. ترک صدر رجب طیب اردوان بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ ہیں، جبکہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر جیسے ہی تقریب کا آغاز ہوا تو دونوں ممالک کے قومی ترانے پیش کیے گئے. وفاقی وزراء بھی اس تقریب میں شریک ہیں اور پاکستان کے قومی ترانہ سب سے پہلے بجایا گیا اور اس لانچنگ تقریب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف ترک صدر کے ہمراہ موجود ہیں. ترک صدر کے ہمراہ تیسرے PNS خیبر کا افتتاح کریں گے. PNS خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا.
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त इस्तंबुल शिप यार्ड पर PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी उनके हमरा हैं। वफाकी वज़रा भी इस तकरीब में शरीक हैं। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने पेश किए गए और इस्तंबुल शिप यार्ड पर PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब है ये। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन पर मबनी मिलजिम मनसूबा पाकिस्तान तुर्की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर एक अहम संग मील की हैसियत रखता है और इससे कबल पाक बहरिया के लिए पहले कारवेट PNS बाबर की लॉन्चिंग तकरीब अगस्त 2021 में इस्तंबुल में मुनाकिद हुई, जबकि दूसरे जहाज PNS बदर का संग बुनियाद मई 2022 में कराची में रखा गया और तीसरे PNS खैबर का अब इफ्तिताह किया जा रहा है और ये लॉन्चिंग तकरीब इस वक्त इस्तंबुल शिप यार्ड पर जारी है। इस्तंबुल शिपयार्ड पर PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब इस वक्त जारी है। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी उनके हमरा मौजूद हैं। तुर्क सदर के हमरा तीसरे PNS खैबर का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जब वहाँ पर पहुँचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने पेश किए गए, जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन पर मबनी मिलजिम मनसूबा पाकिस्तान तुर्की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हैसियत रखता है और पाकिस्तान का कौमी तराना आगाज़ में बजाया गया। और इसके अलावा अगर इस दौरे की बात की जाए तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस 2 रोज़ा दौरे के दरमियान तुर्किया की ताजिर बिरादरी के वफ़द और ECO ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक के सदर से भी मुलाकात करेंगे, जबकि बाद अज़ां दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। इस्तंबुल शिपयार्ड पर PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस इफ्तिताही तकरीब में मौजूद हैं। वफाकी वज़रा भी इस तकरीब में शरीक हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी उनके हमराह मौजूद हैं। PNS खैबर के इफ्तिताह से पाक तुर्क दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत होगा, जबकि आला सतह तबादले पाक तुर्क शराकत की इम्तियाजी खसूसियत रखते हैं। इससे कबल पाक बहरिया के लिए पहले कारवेट PNS बाबर की लॉन्चिंग तकरीब अगस्त 2021 में इस्तंबुल में मुनाकिद हुई, जबकि तीसरे PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब इस वक्त इस्तंबुल शिपयार्ड में जारी है और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस इफ्तिताही तकरीब में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर आला सतह वफ़द के हमरा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुँचे हैं और इस वक्त वो इस्तंबुल शिपयार्ड पर PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जब तकरीब में शिरकत के लिए पहुँचे तो तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और तकरीब का आगाज़ दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाकर किया गया। आला सतह तबादले पाक तुर्क शराकत की इम्तियाजी खसूसियत रखते हैं, जबकि PNS खैबर के इफ्तिताह से पाक तुर्क दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत होगा। इस्तंबुल शिपयार्ड पर PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस तकरीब में मौजूद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी उनके हमरा। तुर्क सदर के हमरा तीसरे PNS खैबर का इफ्तिताह करेंगे। PNS खैबर के इफ्तिताह से पाक तुर्क दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे तुर्किया पर मौजूद हैं और अगर इस दौरे की बात की जाए तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस तकरीब में मौजूद हैं। PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब है। बाद अज़ां दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे, जबकि इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म तुर्किया की ताजिर बिरादरी के वफ़द और ECO ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक के सदर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन पर मबनी मिलजिम मनसूबा पाकिस्तान तुर्की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। इस्तंबुल शिपयार्ड पर PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब इस वक्त जारी है। ये मनाजिर तकरीब के बराह रास्त आप पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त तकरीब में मौजूद हैं, जबकि वफाकी वज़रा भी उनके हमरा मौजूद हैं और इस्तंबुल शिपयार्ड पर तीसरी PNS खैबर की ये इफ्तिताही तकरीब है। तुर्क सदर के हमरा तीसरे PNS खैबर का इफ्तिताह करेंगे। PNS खैबर के इफ्तिताह से पाक तुर्क दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत होगा।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर जब इस्तांबुल पहुंचे तो हवाई अड्डे पर इस्तांबुल के नायब गवर्नर की जानिब से और आला और सिविल अस्करी हुकाम की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। इस दौरे के दौरान सदर रजब तैयब एर्दोगान से दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत भी होगी, जबकि इस वक्त इस्तांबुल शिपयार्ड पर पाक बहरिया के 4 मिल्जन कार्वेट जहाज़ों में से तीसरे PNS खैबर की इफ्तिताही तकरीब इस वक्त जारी है और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस इफ्तिताही तकरीब में मौजूद हैं और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी उनके हमरा हैं। वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब और सैयद नवीद कमर भी इस तकरीब में शरीक हैं। वज़ीर दिफाई पैदावार इसरार तरीन भी इस तकरीब में मौजूद हैं। तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने पेश किए गए। शिपयार्ड पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। 2 रोज़ा ये दौरा तुर्किया है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का और इस दौरे के दौरान इस वक्त इस्तांबुल शिपयार्ड पर तीसरे PNS खैबर की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन पर मबनी मिलजम मनसूबा पाकिस्तान तुर्की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। इससे कबल पाक बहरिया के लिए पहले कार्वेट PNS बाबर की लॉन्चिंग तकरीब अगस्त 2021 में इस्तांबुल में मुनक़िद हुई थी, जबकि दूसरे जहाज PNS बदर मई 2022 में कराची में इनक़ाद किया गया था। इस्तांबुल शिपयार्ड पर PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब के मनाजिर हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब में मौजूद हैं और तुर्क सदर के हमरा तीसरे PNS खैबर का इफ्तिताह करेंगे और PNS खैबर के इफ्तिताह से पाक तुर्क दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत होगा। आला सतह तबादले पाक तुर्क शराकत की इम्तियाजी खसूसियत रखते हैं, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन पर मबनी मिलजम मनसूबा पाकिस्तान तुर्की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। शिपयार्ड आमद पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस तकरीब में वफाकी वज़रा के हमरा मौजूद हैं। वफाकी वज़रा भी उनके साथ शरीक हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी उनके हमरा हैं और तुर्क सदर के हमरा तीसरे PNS खैबर का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब और सैयद नवीद कमर भी मौजूद हैं, जबकि वज़ीर दिफाई पैदावार मोहम्मद इसरार तरीन भी इस तकरीब में मौजूद हैं। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने पेश किए गए और शिपयार्ड आमद पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अगर हम वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के 2 रोज़ा दौरे की बात करें तो इस मौके पर वज़ीर आज़म तुर्किया की ताजिर बिरादरी के वफ़द और ECO ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक के सदर से भी मुलाकात करेंगे, जबकि बाद दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे और मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। इस्तांबुल शिपयार्ड के ये मनाजिर हैं जहाँ पर PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब इस वक्त जारी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी उनके हमरा हैं और तुर्क सदर के हमरा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तीसरे PNS खैबर का इफ्तिताह करेंगे, जबकि इससे कबल पाक बहरिया के लिए पहले कार्वेट PNS बाबर की लॉन्चिंग तकरीब अगस्त 2021 में इस्तांबुल में मुनक़िद हुई थी, जबकि दूसरे जहाज़ PNS बदर के हवाले से मई 2022 में कराची में तकरीब का इनक़ाद किया गया था और इस वक्त तीसरे PNS खैबर के इफ्तिताही तकरीब इस्तांबुल शिपयार्ड पर जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा भी उनके साथ मौजूद हैं, वहाँ पर तकरीब में शिरकत के लिए मौजूद हैं। इस्तांबुल शिपयार्ड पर तीसरे PNS खैबर की इफ्तिताही तकरीब इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस तकरीब में मौजूद हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी उनके हमरा हैं, जबकि वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब और सैयद नवीद कमर भी तकरीब में शरीक हैं और वज़ीर दिफाई पैदावार मोहम्मद इसरार तरीन भी इस तकरीब में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर आला सतह वफ़द के हमरा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस वक्त मौजूद हैं और इस्तांबुल शिपयार्ड पर PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब इस वक्त जारी है। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन पर मबनी मिलजम मनसूबा पाकिस्तान तुर्की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर एक अहम संग मील की हैसियत रखता है और PNS खैबर के इफ्तिताह से पाक तुर्क दिफाई ताउन मजीद मजबूत होगा। आला सतह तबादले पाक तुर्क शराकत की इम्तियाजी खसूसियत रखते हैं। शिपयार्ड आमद पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जबकि दोनों ममालिक के कौमी तराने भी पेश किए गए। बाद दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे और मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।
इस्तांबुल शिपयार्ड पर PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब इस वक्त जारी है। आप ये मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस तकरीब में मौजूद हैं। शिपयार्ड आमद पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से इस्तकबाल उनका किया गया, जबकि तुर्क सदर के हमदर्दी से PNS खैबर का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। His Excellency Mr. Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey, Honorable Mr. Shahbaz Sharif, Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mr. Hulusi Akar, Minister of National Defence, Mr. Sharif, Minister for Defence Protection Pakistan, Admiral Arjunand Tazbigulu, Commander Turkish Naval Forces, senior officers of Turkish Armed Forces, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, good afternoon, good evening. It is indeed a great honor and privilege for me to witness launching of Pakistan Navy Belgium ship Khyber designate for Pakistan Navy and concurrent key laying and steel cutting of offshore patrol vessels being constructed for the Turkish Navy. Undoubtedly, today's events are major milestones towards construction of state-of-the-art platforms for their subsequent induction in the respective navies of our two brotherly countries. I take this opportunity to express my profound gratitude to His Excellency Mr. Recep Tayyip Erdogan, the President of the Republic of Turkey, for vesting this special honor with his presence at this jointly held ceremony. The presence of Honorable Mr. Shahbaz construction of state-of-the-art platforms for their subsequent induction in the respective navies of our two brotherly countries. I take this opportunity to express my profound gratitude to His Excellency Mr. Recep Tayyip Erdogan, the President of Republic of Turkey, for vesting this special honor with his presence at this jointly held ceremony. The presence of Honorable Mr. Shahbaz Sharif, Prime Minister of Pakistan, on this auspicious occasion signifies the exceptional nature of close and cordial relations between our two countries. Ladies and gentlemen, Pakistan and Turkey enjoy historical and special relations. The long-lasting and deep-rooted friendship has endured the test of time and rests firmly on the pillars of trust, deep respect, and mutual support based on principles. The same is manifested in our military collaborations and is evidenced by the construction of Milgem-class ships for the Pakistan Navy. Pakistan Navy contracted Messrs. Esfet for construction of 4 Milgem-class ships, 2 of which are being built in Turkish Navy's Istanbul Naval Shipyard and the other 2 at Karachi Shipyard and Engineering Works. The first among them, PNS Khyber, was launched in August 2021 at this place, Istanbul Naval Shipyard. The second one, PNS Badr designate, was launched at Karachi Shipyard in May this year. The ceremony of which was attended by the Honorable Prime Minister of Pakistan and Mr. Hulusi Akar, Minister of National Defence of Turkey. Milgem project for Pakistan Navy not only covers the delivery of warships, but also embodies transfer of technology, upgrade of Karachi shipyard, and offset package to establish Pakistan Navy Platform Design House for designing next generation Jinnah class warships. It is therefore
not about delivery of ships alone, but instituting a long and enduring partnership between our two brotherly countries and our navies. Ladies and gentlemen, Pakistan's geostrategic location and its economic significance draws the interest of regional as well as global powers from around the world. Therefore, maintaining security and stability is important. In our important maritime zone is a sacred responsibility entrusted to Pakistan Navy. The induction of these ships in Pakistan Navy will significantly strengthen our maritime defense and deterrence capabilities, which will ensure secure and stable seas for international trade and economy. Belgium-class ships will become a core element of our response to current and future maritime challenges and contribute to maintaining balance of power in the Indian Ocean region. Taking this opportunity, I would like to acknowledge the commitment and dedication of Mrs. Asfat's team towards this pivotal project. The strong commitment and professional acumen exhibited by Asfat management, supervision of Turkish Ministry of National Defense, and active support of Turkish Navy will remain instrumental in the successful completion of Pakistan Navy Belgium program. I am confident that Mrs. Asfat project team, along with Istanbul Naval Shipyard, will live up to their reputation and accomplish the entrusted task in the most befitting manner. I also foresee an active role of Turkish Navy to assist Pakistan Navy in the smooth induction of these modern warships. Ladies and gentlemen, in the end, I would like to thank the Turkish government and in particular Admiral Ercüment for inviting me to this ceremony. It is also most gratifying that His Excellency Mr. Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey, and Honorable Prime Minister of Pakistan, Mr. Shahbaz Sharif, are present on this historic occasion. May Allah subhanahu wa ta'ala bestow His choicest blessings on all of us in successful and timely completion of this project and serve our respective nations for years to come. Ameen. I thank you all. Yaşasın Pakistan, Türkiye dostluğu, Pakistan, Türk dosti, zindabad. I thank you all. Konuşmalarını yapmak üzere Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın teşrifleri arz olunur. पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। इस तारीखी मौके पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करते हैं, जबकि तुर्किया के सदर का शुक्रिया भी अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की तारीखी ताल्लुकात के हामिल हैं। पाक बहरिया के लिए पहले कार्वेट PNS बाबर की लॉन्चिंग तकरीब 2021 में इस्तांबुल में हुई थी, जबकि दूसरे जहाज PNS बदर की तकरीब 2022 मई में कराची में हुई थी। पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिहाज से खित्ते में एक अहम मकाम रखता है और इस तारीखी मौके पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हमेशा से तारीखी रहे हैं और पाकिस्तान तुर्की दोस्ती हमेशा जिंदा रहेगी। इस्तांबुल शिपयार्ड पर PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी इस तकरीब में मौजूद हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी उनके हमरा हैं, जबकि इससे कबल पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी तकरीब से खिताब कर रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात के हवाले से कहा कि पाकिस्तान और तुर्की तारीखी ताल्लुकात के हामिल हैं और पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिहाज से खित्ते में एक अहम मुकाम रखता है। तुर्क सदर के हमरा तीसरे PNS खैबर का इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस तकरीब में मौजूद हैं और PNS खैबर के इफ्तिताह से पाक तुर्क दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत होगा, जबकि आला सतह तबादले शराकत की इम्तियाजी खसूसियत रखते हैं।
पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस्तांबुल शिपयार्ड पर PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस तकरीब में मौजूद हैं, जबकि वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब, सैयद नवीद कमर भी इस तकरीब में शरीक हैं, जबकि वज़ीर दिफाई पैदावार इसरार तरीन भी इस तकरीब में मौजूद हैं। शिपयार्ड आमद पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्क सदर के हमरा तीसरे PNS खैबर का इफ्तिताह करेंगे। PNS खैबर के इफ्तिताह से पाक तुर्क दिफाई ताउन मजीद मजबूत होगा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। इस तारीखी मौके पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करते हैं और तुर्किया के सदर का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिहाज से खत्ते में एक अहम मकाम रखता है। पाकिस्तान और तुर्की के तारीखी ताल्लुकात हैं और ये ताल्लुकात हमेशा इसी तरह से रहेंगे। पाक बहरिया के लिए पहले कारवेट PNS बाबर की लॉन्चिंग तकरीब 2021 में इस्तांबुल में हुई थी, जबकि दूसरे जहाज PNS बदर की लॉन्चिंग तकरीब इसी साल मई में कराची में हुई थी। और इस वक्त PNS खैबर तीसरे की इफ्तिताही तकरीब इस वक्त जारी है। इस्तांबुल शिपयार्ड पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस तकरीब में मौजूद हैं, जबकि वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब, सैयद नवीद कमर भी शरीक हैं। वज़ीर दिफाई पैदावार इसरार तरीन भी इस तकरीब में मौजूद हैं। शिपयार्ड आमद पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और तकरीब का आगाज़ दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाकर किया गया। तुर्क सदर के हमरा तीसरे PNS खैबर का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे और PNS खैबर के इफ्तिताह से पाक तुर्क दिफाई ताउन मजीद मजबूत होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त इस्तांबुल में मौजूद हैं और जिस वक्त वो पहुंचे थे तो हवाई अड्डे पर इस्तांबुल के नायब गवर्नर महमूद हरसनाली और आला और सिविल अस्करी हुकाम की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया था। और इस वक्त इस्तांबुल शिपयार्ड पर पाक बहरे के 4 मुलजिम कारवेट जहाज़ों में से तीसरे PNS खैबर की इफ्तिताही तकरीब जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त इस तकरीब में मौजूद हैं। वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब, सैयद नवीद कमर भी शरीक हैं, जबकि वज़ीर दिफाई पैदावार इसरार तरीन भी इस तकरीब में मौजूद हैं। और शिपयार्ड आमद पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इससे कबल पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी तकरीब से खिताब कर रहे थे और पाकिस्तान और तुर्की के तारीखी ताल्लुकात पर रोशनी डाल रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के तारीखी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिहाज से खत्ते में एक अहम मकाम रखता है। पाकिस्तान तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान और तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में दोनों ममालिक ने एक दूसरे का हमेशा से मुस्बत तरीके से साथ दिया है और इस तारीखी मौके पर भी दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करते हैं और तुर्किया के सदर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस 2 रोज़ा तुर्किया के दौरे के दरमियान मसरूफियात की बात की जाए तो वज़ीर आज़म इस दौरे के दौरान तुर्किया के ताजिर बिरादरी के वफ्द और ECO ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक के सदर से भी मुलाकात करेंगे, जबकि इस वक्त इस्तांबुल शिपयार्ड पर PNS खैबर की इफ्तिताही तकरीब जारी है। इससे कबल पाक बहरिया के लिए पहले कारवेट PNS बाबर की लॉन्चिंग तकरीब अगस्त 2021 में इस्तांबुल में मुनाकिद हुई थी, जबकि दूसरे जहाज़ PNS मई 2022 में कराची में रखी गई थी। देख रहे हैं इस्तांबुल शिपयार्ड पर तीसरे PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब है। वज़ीर आज़म तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के साथ उनके विफाकी वज़रा भी हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी हैं। विफाकी वज़रा सैयद नवीद कमर, इसरार तरीन भी मौजूद हैं। इससे कबल जब वज़ीर आज़म इस्तांबुल शिपयार्ड पर पहुंचे तो वज़ीर आज़म को शानदार तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, बेहतरीन तरीके से उनको वेलकम किया गया, दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए। वज़ीर आज़म सदर रजब तैयब एर्दोगान की खुसूसी दावत पर नाज़रीन इस दौरे पर मौजूद हैं। इस वक्त ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये इस्तांबुल शिपयार्ड के मनाजिर हैं, जहां पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म भी अपने वफाकी वज़रा के साथ मौजूद हैं। पाक बहरिया के लिए 4 मिलजिम कोवेट जहाज़ों में से तीसरे जहाज़ PNS खैबर का इफ्तिताह आज होने जा रहा है। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर ये इफ्तिताह करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन पर मबनी मिलजिम मंसूबे की अगर हम बात करें तो ये मंसूबा दोनों ममालिक पाकिस्तान और तुर्किया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसमें एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। इससे कबल अगर थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करें तो पाक बहरिया के लिए पहले कोविड PNS बाबर की लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद हुई थी अगस्त 2021 में। ये तकरीब भी इस्तांबुल में ही मुनक्किद हुई थी। दूसरे जहाज PNS बदर का संग बुनियाद मई में रखा गया था, 2022 में ये तकरीब हुई थी और कराची में ये मुनक्किद की गई थी। अगर हम इस दौरे की अहमियत के हवाले से बात करें तो वज़ीर आज़म ने रवानगी से कबल आज एक ट्वीट भी किया जिसमें उनका ये कहना था कि तीसरे मिलजिम कोविड जहाज का इफ्तिताह
तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान जो गहरे दिफाई ताउन है, जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, उसकी मजबूती की अक्कासी करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है। मजीद उन्होंने ये भी कहा था कि सदर रजब एर्दोगान की क़यादत में हमारे जो दो तरफा ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान और तुर्किया के जो ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, वो एक नए दौर में दाखिल हो गई है। ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त, इस्तांबुल शिपयार्ड पर तीसरे PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब होने जा रही है। ये तकरीब दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक जो ताल्लुकात हैं उसकी तो गमाजी करता ही करता है, साथ साथ इस बात की भी अक्कासी करता है कि दोनों ममालिक के धाइयों पर मुहित जो ताल्लुकात हैं वो हर मौके पर पूरे उतरे हैं और ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अगर थोड़ी सी डिटेल हम आपके साथ इसकी शेयर करें, ये जो प्रोजेक्ट है मिल्जम प्रोजेक्ट, इसकी बात करें तो दोनों ममालिक के दरमियान ये प्रोजेक्ट 2018 में इनिशिएट किया गया था। इस जो प्रोजेक्ट के मुताबिक ये तय पाया था कि दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान नेवी जो है वो तुर्किया से मिल्जम क्लास के 4 जहाज लेगी। ये जो जहाज हैं इनकी अगर हम डिटेल थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर कर सकें तो ये है कि ये ज़बरदस्त सलाहियतों के मालिक हैं। 29 नॉटिकल माइल की रफ्तार है इनकी, 2400 टन की सलाहियत रखते हैं अगर कैपेसिटी के लिहाज से हम इनकी बात करें, और राडार से इनको बासानी छुपाया जा सकता है। यकीनन ये जो प्रोजेक्ट है दोनों मालिक के दरमियान, ये पाक बहरिया की जो दिफाई सलाहियतें हैं इसमें मजीद निखार भी पैदा करेगा, मजीद जिद्दत भी लेकर आएगा। जो बात अभी पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने जो खिताब भी किया इस तकरीब से, उसमें भी उन्होंने यही फरमाया कि पाक तुर्किया ताल्लुकात दहाइयों पर मौजूद हैं और ये जो प्रोजेक्ट है ये दोनों मालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी भी करता है, जो कि हर गुजरते वक्त के साथ गहरे होते जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी बदौलत पाकिस्तान नेवी की जो दिफाई सलाहियतें हैं उसमें मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उस लिहाज से पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में तवज्जो का हामिल भी है। और His Excellency Honorable Mr. Recep Tayyip Erdogan, President Republic of Turkey, the Honorable Prime Minister, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. It is a great privilege to be here at Istanbul Naval Shipyard for launching of second PN Milgem class ship PNS Khyber for Pakistan Navy and keel laying and steel cutting of Turkish Navy offshore patrol vessel together in today's ceremony is an evidence of our brotherhood and strong defense collaboration. PN Milgem class ship being built for Pakistan Navy is collaboration with MS Asfalt of Turkey is a demonstration of our strong drive towards indigenization, which is the need of our. I'm confident that this cooperation will further intensify in future. I congratulate MS Asfalt and Istanbul Shipyard for launching this ship as per schedule. Ladies and gentlemen, the Turkish defense industry has made great progress under President Erdogan in the last 2 decades. It has increased self-reliance in critical defense systems and technologies. Several Turkish companies are now the leading defense manufacturer in the world. We were very glad to receive a strong participation of over 28 Turkish companies in the Ideas Defense Expo held earlier this month in Karachi. Ladies and gentlemen, like Turkey, Pakistan is also blessed with a large and resource-rich maritime zone. The trade and maritime activities are supported by our major seaport of Karachi and Port Qasim. Our trade activities are going to increase manifold with
further development of financial and industrial infrastructure. The ongoing China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) project is set to enhance regional connectivity and maximize trade and transshipment with Gwadar as its focal point. This would require creating additional capacity to support expansion and economic integration. Along with these developments and opportunities, our country also faces security challenges. Consequently, the responsibilities of Pakistan Navy have also increased to safeguard Pakistan's maritime interests. I am confident that PN Milgem ship will play a key role in fulfilling our national security needs and help Pakistan Navy to transform into formidable force. Ladies and gentlemen, relations between Pakistan and Turkey are exceptional and time-tested. Although the two countries are geographically apart, we are united by our faith, common heritage, shared civilization, and unanimity of views on global and strategic issues. We celebrate our achievements and share our sorrows, whether it is the Kashmir dispute or the Cyprus issue. The two countries have a strong tradition of supporting each other. We stand together, shoulder to shoulder, against all threats, including on the issue of terrorism. Joint ventures like construction of PN Milgem ship will strengthen our existing defense ties and open new venues of cooperation in the field of construction of advanced platform and new emerging technologies. In the end, I would once again express my profound gratitude to His Excellency President Erdogan for inviting me on this historic occasion and congratulate all those who involved in PN Milgem project. May our friendship and brotherhood continue to flourish and blossom in future. Pakistan-Turkey friendship, Zindabad. Konuşmalarını yapmak üzere Pakistan Başbakanı Sayın Mian Muhammed Shahbaz Sharif'in teşrifleri arz olunur. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम. Honorable my brother President Tayyip Erdogan, President of Republic of Turkey, Honorable Mustafa Sento, Speaker of Grand Turkish National Assembly, Honorable General Hulusi Akar, Minister National Defense of Turkey, Honorable Admiral
Amjad Khan Niazi, Chief of Naval Staff of Pakistan, Honorable Ministers, Excellencies, guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a great pleasure to be here again, visiting my second home. And it is another great day in our historical relations and brotherhood to be here and witness launching of second Miljam Khyber for Pakistan Navy. My brother President Tayyip Erdogan, this occasion takes me back to 1920s when our brothers and sisters in Turkey were fighting the war of freedom, and Muslims of subcontinent were launching a movement in favor of this great war of freedom in Turkey. Mothers, sisters were donating their bangles. Shopkeepers, farmers, students were raising funds for their Turkish brothers to have this contribution, humble contribution towards Turkish great fight for freedom. And that's how this history of our relations went on, strengthening from pillar to post. And little did our forefathers knew that whatever humble contribution they are making for their brothers and sisters in Turkey will not only be remembered by Turkish nation for all times to come, but Turkey would stand by Pakistan through thick and thin. Turkey would stand by Pakistan during earthquakes, during floods, and supporting Pakistan's cause at every international forum. And Turkey would never hesitate to come to Pakistan's rescue. Our forefathers did not know about this. They simply were doing their religious and brotherly role to support their brothers and sisters in Turkey. But today in Turkish schools and Turkish universities and colleges, it is in their curricula, and it is clearly explained to students what Muslims of subcontinent did for Turkish brothers and sisters. My dear brother, President Tayyip Erdogan, you are a very visionary leader. And I don't say this just to please you. I say this as an article of faith with me. Your vision, your dynamic leadership has transformed this great nation, Turkey, into a very modern society. And under your watch, social welfare projects have been accomplished in a manner and in a style unheard of. Today, in the far-flung areas of Turkey, mothers and children, boys and girls and elderly people get medicine, high-quality medical treatment, education, jobs,
and you have strengthened industry and agriculture. This is because of your dynamism and your great leadership. Brother President Tayyip Erdogan, today we are here to witness this launching of this wonderful ship for Pakistan Navy, and that goes to explain in no uncertain terms that Pakistan and Turkey are deeply engaged in promoting our defense capabilities for peace, to ward off aggression. And as they say, if you want to live in peace, you must be prepared for war. So this is not for aggression, this is for defense. And I would like to propose my brother President Tayyip Erdogan and to great minds sitting here, both Pakistani and Turkish experts, Turkish Navy officers and Pakistani naval officers, and those workers who have done a great job to build this wonderful ship, that let us further enhance our production capacities. Let us further cooperate in this field to ensure that peace restores in this world. Today, this world is facing great tensions. This conflict of Russia and Ukraine has created multifarious problems for global societies. And I must commend your efforts and deeply appreciate your wisdom by brokering deal for shipments of wheat parcels from Ukraine. Otherwise, wheat and other commodities were getting in great shortage around the globe. And developing countries like Pakistan were facing serious difficulties. We are a developing country. Our import bill of oil and petroleum products have touched during the last year to the tune of $25 billion. And that's why we are wanting to immediately shift towards solar energy, towards wind power, towards hydel power generation. And my second home, Turkey, has great potential. Turkish investors, Turkish businessmen have great potential to invest in these fields already. Turkish investments in solar and hydel power and wind power are available in Pakistan. I want to make use of this opportunity to propose to you, my dear brother President Tayyip Erdogan, that let's join hands together and get rid of high carbon emissions, cut our import bills, and let's really promote investments in these fields. Solar energy will be produced by sun, given by Allah Almighty. Wind, hawa. I think in Turkey also you say wind, hawa, I believe. And then hydel power generation. All this put together will make great sense and make great vision for promoting investments between our two brotherly countries. I think it's high time that we really now transform our relations into something, because the world is envious about our friendship and our brotherhood. But they also say that while these two countries are great nations, their hearts beat together, and our hearts beat together. This is true. But they also say that our trade relations, our investment relations, those do not commensurate with our historical relations and our brotherhood.
I think under your great leadership, I think we stand and we have a great chance to move forward in this field as well. I wouldn't want to make our brothers shiver in this, very cold weather, but I'd like to say a few words more. My dear brother President, recently Pakistan was hit by one of the most devastating floods, and Turkey again was in the front line. You were so kind to call me that night and said, Shahbaz Sharif, what can I do for you? And what Turkey can do for Pakistan? And here is the story, Mr. President, that 13 good strains of with humanitarian assistance goods left Turkey for Pakistan. 15 Turkish military aircrafts brought food, tents, medicines, medical teams to Pakistan. 6 Turkish Red Crescent trucks, and Rajab Tayyip Erdogan tent city in Bolari in the province of Sindh, and 13 goods trains carried 72,000 tons of humanitarian assistance. Only a brother would do it. Only a family member would do it. And this also reminds me, Brother President, of 2010, when floods hit Punjab, the province of Punjab, and you were kind to visit yourself the flood hit areas, and I was with you, with former Prime Minister Makhdoom Yusuf Raza Gilani, and my sister, Madam Amina Tayyib Erdogan, was also over there. And not only Turkish government donated funds, but the people of Turkey in Istanbul and Ankara, in the streets, raised funds for those flood-affected people. My sister, Madam Amina Erdogan, she donated her bracelet. What else is a manifestation of this brotherhood? So, I want to conclude that we are two great nations. We have unique relations. We are wedded into relations which no power in the world can breach it or weaken it. So let's celebrate this great event and resolve that together we will march forward with a sense of pride and progress and prosperity, bringing happiness to both the nations, Turk people, our brothers, and Pakistani people, and of course, people around the globe. I would like to once again thank you all, and Yashashan Turkey Pakistan Kardishle, Pakistan Turkey Dosti Zindabad. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस्तांबुल शिपयार्ड पर PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज इस तारीखी तकरीब में शिरकत के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। अपने दूसरे घर तुर्की का दोबारा दौरा करने पर खुश हूँ। वज़ीर आज़म ने जहाज की तैयारी में हिस्सा लेने वालों को खिराज तहसीन पेश किया और उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे तारीखी ताल्लुकात में एक अजीम दिन है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे तारीखी ताल्लुकात हैं। तुर्की ने हमेशा मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। तुर्की हर आलमी फोरम पर पाकिस्तान का हमेशा साथ देता आया है। Muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kardeşim Shahbaz Şerif'i yeniden ülkemizde misafir etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kendisine ve heyetine, İstanbul'umuza, evinize
to Istanbul. Kardeş Pakistan'la Welcome savunma to your sanayi home. alanındaki ilişkilerimizi taçlandıran en önemli işbirliği projelerimiz arasında One of the most important cooperation projects that crown our partnership with Pakistan is the Miljam project. korvetinin denize indirilme Today we töreni will be vesilesiyle carrying out the launching ceremony of Khyber, a corvette, a part of Miljam project. That's why we gathered here together. From the workers to engineers, anyone who contributed to this project, I would like to congratulate each one of them on behalf of myself and my nation. milli mücadele günlerimizde During our Independence War days, the Pakistani brothers and sisters, aldırmadan bizlere despite all the difficulties they had to endure, extended their support to us, which we have never forgotten. Pakistan konuma sahip olmuş. has always had a unique place in the hearts of Turkish Önemli bir people. kısmını sular altında bırakan sel felaketi sonrasında After the flood disaster, 85 the milyon olarak scenes hepimizin yüreğini dağladı. wrenched the hearts of every one of us as the 85 million people. Oluşturduğumuz Due to the köprüsüyle brotherly relations, we have created Pakistan halkı için an air bridge, and together with our humanitarian trains, we mobilized all our means and resources for our Pakistani brothers and sisters. felaketinin yaralarını sarmaya başladıklarını görmekten We are really pleased with the fact that our Pakistani brothers and sisters are healing their wounds inflicted as a result of the flood disasters. In order to overcome those challenging times, we will continue to stand with Pakistan as we have stood with them in the past. değerli kardeşlerim, Dear brothers and sisters, Pakistan'la diplomatik ilişkilerimizin tesisinin this year we are marking the yıl dönümünü 75th idrak ediyoruz. year anniversary of the establishment of diplomatic relations between our countries. Ve Our solidarity münasip şekilde is stratejik bir perspektifle getting stronger with a strategic perspective every passing day thanks to our önemli great bonds. And defense industry is one of the most important pillars of this solidarity and cooperation. Just like Turkey, Pakistan, due to the instabilities in its proximate geography, has been facing with certain challenges for a while. saldırıları başta oldu. Starting with the attacks of the terrorist organizations, our Pakistani brothers and sisters have to fight with many simultaneous ongoing threats. As a country who has been fighting against the terrorist organizations for an uninterrupted 40 years of a time frame, we really know well what kind of pains that our Pakistani brothers and sisters had felt in their hearts. So that's why I would like to thank each one of you and the Pakistani nation on behalf of myself and my nation for showing solidarity with us after the terror attack that took place in Istanbul. Sınırlarımız içinde ve dışında sürdüreceğimizin altını Once again, I would like to reiterate that we will continue to fight against any form of terror inside and outside of our borders. düşmanlarından döktükleri her damla kanın hesabı Every drop of blood shed by those terrorist organizations will be avenged her türlü ömürlerini in bu halde retaliation. bizden kopartılan öğretmenlerimizin 5 yaşındaki Our teachers and the 5-year-old yüzlerine bakamayız. innocent children who have been martyred Şehitlerimizin ruhlarını due to the terror attacks, mahcup olacak their responsibilities are upon our shoulders in the judgment day. DAEŞ'la mücadele kisvesi altında Under the disguise of fighting against Daesh, uzantısını silaha ve desteğe boğanların da the ones who are supporting the offshoots of the terrorist organization in Syria shouldn't call upon us for calmness. sahada göğüs Daesh, which is the result of a project, is fought by us on the battleground. There is only one NATO
ally who fought against the Daesh on site. As a result, no one can teach us a lesson in the fight against the terrorism. Whenever there is a even small attack on their lines, they have come thousands of kilometers away from their homeland and destroyed everything, so they cannot expect from us to show tolerance to those terrorist organizations. The Republic of Turkey is determined to continue its strategy of eradicating terror at its source. In addition to all of those, thanks to the developments and achievements that Turkey had in recent years, has already become a very important regional and global actor. Turkey is not limited to its borders, but together with its brothers, friends and allies, Turkey represents a greater strength and power. Without a doubt, the defense industry contributed remarkably to this point. Thanks to the level that we have reached in defense industry, thanks to God, we manage all the processes that we are involved in without asking for the permission of anyone else. Taking a look at the statistics, in 2002 we only had 62 defense industry projects, but today the defense industry projects have already superseded 752. In 2012, the budget of defense industry projects was only $5.5 billion, but today we have the budget of $75 billion of defense industry projects. In that sense, as of the end of this year, our bilateral trade will reach $4 billion with Pakistan, from helicopters to fighter jets to ships. We will be producing those systems that we need. We design them locally, we produce them locally, and we develop them locally. There are only few countries who can design, build, and produce the national warship. We are one of those top 10 countries. Together with our sea platforms designed and built in our Navy and shipyard, we are really proud. Thanks to the Miljam project, the fighter jets with the cutting-edge technology has the competitive advantage globally. Up until now, we have launched 4 of our corvettes. Sancaktar and Bayraktar, the amphibious ships, are at the service of our Navy. The first intelligence ship of Turkey is Ufuk, and we have commissioned it this year. The keel-laying of Hızır Reis and Salman Reis welding ceremony, one of the first national submarines, have been carried out as of this year. Sancar, Mir, Albatros, Marlin projects are the projects through which we will hopefully achieve the commissioning of drones into our Navy. Hopefully, in 2023, we will witness many first innovations in our Navy. Kızıl Elma, at the same time, the national submarine, artificial intelligence, and in the fields of robotics, we have initiated many projects, and as swiftly as possible, we will complete all those projects. In the field of defense, we will carry Turkey to the first place in the Super League, and until we accomplish it, we will continue to work day and night. Distinguished guests, as the Republic of Turkey,
We do not produce those systems alone, but at the same time, we are sharing those products with the brotherly and ally countries like Pakistan. In order to intensify and strengthen the defense infrastructure of Pakistan, we extend any support that we can. In that regard, with the Miljam Corvette project that we have undersigned, we have provided great achievements to our cooperation in the field of defense industry. 4 Miljam Corvette is designed and produced under the scope of this project, and the ships are about to be produced completely. 2 of those corvettes are built inside of Turkey, and the other 2 is being built in Pakistan. Additionally, the additional parts and the ammunitions of those corvettes are again selected from our national products. Together with Mr. President Alvi, we have participated in the killing ceremony and the launching ceremony of Babil. And Bedil ship was launched in Karachi, if you remember. And today, under the scope of Pakistan Miljam Corvette project, we carry out the launching ceremony of the 3rd ship, Khyber, and our 4th ship, if God is willing, will be delivered to our Pakistani brothers and sisters as of February 2025. We are determined and have the common will of strengthening our partnership in the field of defense industry. By improving our partnership and cooperation with Pakistan in every field, I am certain that we will present a role model, an exemplary model of cooperation and collaboration with Pakistan. May God open our path forward. So with those ideas in my mind, once again I hope and pray that Pakistan Miljam project to be auspicious for our countries. I once again would like to congratulate and thank all workers and engineers who contributed to the realization of this project. I also would like to thank my dear brother Shahbaz Sharif and his delegation for sharing this joy and excitement with us. I salute you all once again with love and respect. Turkey, Pakistan, Zindabad. We have been listening to Turkey's President Recep Tayyip Erdogan address. तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान इस्तांबुल में शिपयार्ड पर 3रे PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस जहाज की तैयारी में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि दो तरफा दिफाई ताउन बाहमी ताल्लुकात का अहम सतून है। पाक तुर्क माहिरीन इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती के हवाले से उनका यह कहना था कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान जो दोस्ती है गहरी और मुनफरिद है और ये ताल्लुकात इंतहाई तवील अरसे पर मुहित है। पाकिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल आई, तुर्किया ने हर मुमकिन पाकिस्तान की मदद की। मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ तुर्किया इसी तरह खड़ा रहेगा जिस तरह माजी में खड़ा रहा है। हर गुजरते वक्त के साथ उनका यह कहना था कि पाकिस्तान और तुर्किया के जो ताल्लुकात हैं वो गहरे और मजबूत से मजबूत तर हुए हैं। पाकिस्तान और तुर्किया दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। ऐसा कहना था तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का। और ये आप लॉन्चिंग की तकरीब देख रहे हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं। दोनों रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं। that are not historically big Western countries that are इफ्तिताह not कर big दिया गया है। exporters. वज़ीर आज़म For them to मोहम्मद come शहबाज together, शरीफ और तुर्क सदर cooperate, रजब तैयब be एर्दोगान able दोनों to, इस वक्त मौजूद sell हैं। products to और each पाक other. बहरिया के लिए This is a 4 huge मुलजिम कोविड accomplishment. जहाज़ों में This से is a तीसरे huge जहाज shift in PNS the खैबर का geopolitics, इफ्तिताह the, दोनों रहनुमाओं ने कर defense दिया है। industry, power मुश्तरका shift, इफ्तिताह किया going गया है forward. दोनों So रहनुमाओं this की is a sign जानिब of से। changing times, दोनों and the ममालिक के दरमियान Pakistan-Turkey मुश्तरका relationship is ताउन पर definitely मबनी very, मिलजुम very मंसूबा important. Besides दोनों just दोनों ममालिक this के Milgem ताल्लुकात की project sale, खास तौर when we जो look at स्ट्रेटेजिक both पार्टनरशिप countries, है उसमें
इसमें इंतहाई अहमियत का हामिल है, एक अहम संधि मील की हैसियत रखता है। दोनों रहनुमा इस वक्त लॉन्चिंग तकरीब में मौजूद हैं और तीसरे PNS खैबर का इफ्तिताह कर दिया गया है। ये तारीखी मनाजिर हैं जो इस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इससे कबल अगर हम बात करें तो पाक बहरिया के पहले कॉवेट PNS बाबर की लॉन्चिंग तकरीब अगस्त 2021 में हुई थी और ये तकरीब भी इस्तांबुल में ही हुई थी और आज तीसरे PNS खैबर की इफ्तिताही तकरीब है जिसका इफ्तिताह कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। दोनों रहनुमाओं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुश्तरका इफ्तिताह किया है तीसरे PNS खैबर का। इस्तांबुल शिपयार्ड पर PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब इस वक्त जारी है। तीसरे PNS खैबर का इस्तांबुल शिपयार्ड पर इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से मुश्तरका तौर पर PNS खैबर का इफ्तिताह किया गया है। तीसरे PNS खैबर का इस्तांबुल शिपयार्ड पर इफ्तिताह कर दिया गया है। पाकिस्तान तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। पाक तुर्क माहिरीन मुलजिम मंसूबे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की के गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं और इससे कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर की जानिब से खिताब भी किया गया और पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात को अहमियत दी गई। तीसरे PNS खैबर का इस्तांबुल शिपयार्ड पर इफ्तिताह कर दिया गया है। ये मनाजिर है नाज़रीन, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से तीसरे PNS खैबर का इस्तांबुल शिपयार्ड पर तुर्क सदर के हमरा इफ्तिताह किया गया है। तुर्किया के इंजीनियर्स वज़ीर आज़म को डिटेल से आगाह कर रहे हैं। मुख्तलिफ हिस्से वज़ीर आज़म इस वक्त देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। इफ्तिताह कर दिया गया है। बड़ा ही अहम ये प्रोजेक्ट है, बेल्जियम प्रोजेक्ट, जो कि दोनों ममालिक के माबैन इस वक्त जारी है। 2018 में इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था और ये तय पाया था कि पाकिस्तान नेवी जो है वो तुर्किया से बेल्जियम क्लास के 4 जहाज़ लेगी। आज तीसरे जहाज़ PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब है जिसका इफ्तिताह कर दिया गया है। इन अगर जहाज़ों की हम बात करें तो ये नाज़रीन बहुत ही ज़बरदस्त सलाहियतों के मालिक हैं। 29 नॉटिकल माइल की रफ्तार है इनकी और 2400 टन सलाहियत रखते हैं कैपेसिटी के लिहाज से अगर हम इनकी बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा है और रडार से भी इनको आसानी से छुपाया जा सकता है। यकीनी तौर पर पाक बहरिया की दिफाई सलाहियतों की अगर हम बात करें उसमें मज़ीद निखार आएगा, मज़ीद जिद्दत आएगी। ये जो प्रोजेक्ट जारी है दोनों ममालिक के दरमियान, ये एक तरफ तो दोस्ती की अक्कासी करते हैं, दूसरी तरफ जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं वो जिस तरह से रजब तैयब एर्दोगान ने भी कहा और वज़ीर आज़म ने भी अपने खिताब में फरमाया कि हर गुजरते वक्त के साथ ये मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान तुर्किया की दोस्ती ऐसी है जो हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। दुनिया के जो भी तनाज़ात हैं उस पर दोनों ममालिक एक पेज पर हैं। दिफाई सलाहियतों की बात करें या दीगर तनाज़ात की बात करें, दोनों ममालिक एक दूसरे से हम आहंगी रखते हैं। तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। दुनिया की कोई ताकत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को कमज़ोर नहीं कर सकी है और आज इसी ताल्लुकात और दोस्ती की अक्कासी है कि तीसरे PNS खैबर का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस्तांबुल शिपयार्ड पर तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से तीसरे PNS खैबर का इस्तांबुल शिपयार्ड पर इफ्तिताह किया गया है। ये जहाज़ हैं जिसके मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। रहनुमा मौजूद हैं, वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान तुर्किया के सदर भी इस वक्त मौजूद हैं और वज़ीर आज़म तुर्किया के दौरे पर हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने उनको इस दौरे की दावत दी। ये अहम मौका है, तारीखी मौका है। जिस तरह से वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया कुछ देर कबल और ये कहा कि आज की जो तकरीब है निहायत खुशाइंद है, एक तारीखी मौका है जिस पर हम इकट्ठे हुए हैं और आज का दिन जो दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं उस लिहाज से अगर हम बात करें तो ये एक अजीम दिन है। तुर्किया पाकिस्तान की हर आजमाइश में पूरा उतरा है, चाहे वो ज़ल्ज़ला हो, सैलाब हो, कोरोना हो, तुर्किया ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में सदर रजब तैयब एर्दोगान को एक दूर अंदेश लीडर करार दिया और उनकी दूरअंदेशी और उनकी क़यादत को सराहा और कहा कि उनकी ज़ेर क़यादत तुर्किया आज एक फ़लाही रियासत बन चुका है और ये जो पाकिस्तान तुर्किया के ताल्लुकात हैं ये हर गुजरते वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। दुनिया को मुतअद्दिद तनाज़ात का सामना है और अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर दुनिया में अमन से रहना है तो फिर जंग के लिए भी तैयार रहना होगा, यानी अपनी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाना होगा, दुनिया में मनवाना होगा और हर उस चीज़ को अपनी दिफाई सलाहियतों में शामिल करना होगा जो कि वक्त की चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। ये उसी की अक्कासी है। इस्तांबुल शिपयार्ड की ये मनाजिर हैं जहाँ पर तीसरे PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब है।
तीसरे PNS खैबर का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस्तांबुल शिपयार्ड पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया गया है। तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। दुनिया की कोई ताकत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को कमज़ोर नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्तांबुल शिपयार्ड पर तीसरे PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब में खिताब किया और उनकी जानिब से पाकिस्तान और तुर्किया के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान और तुर्की तारीखी ताल्लुकात के हामिल हैं और तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। तुर्की ने हर आलमी फोरम पर पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया है। पाकिस्तान और तुर्किया के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये उस सिलसिले की एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। आज के मनाजिर जिस वक्त आप देख रहे हैं, इससे कबल अगर हम बात करें तो पाक बहलिया के लिए पहले कोविड PNS बाबर की लॉन्चिंग तकरीब अगस्त 2021 में मुनक्किद हुई थी नाजरीन, और ये तकरीब भी इस्तांबुल में ही मुनक्किद की गई थी। दूसरे जहाज PNS बदर की अगर हम बात करें तो उसका संग बुनियाद मई में रखा गया था, 2022 ही में रखा गया था और कराची में वो तकरीब मुनक्किद की गई थी। और आज ये तीसरा PNS खैबर है जिसकी लॉन्चिंग तकरीब है, जिसका इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तकरीब का इफ्तिताह किया है इस लॉन्चिंग तकरीब से। हासिल करोगे और पाकिस्तान के लिए एक नेक शगुन साबित होगे। हम उम्मीद करते हैं कि तुम समंदर की लहरों पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम शमूलियत इख्तियार करने वाले जहाज खैबर, आज हम तुझे समंदर में उतार रहे हैं। हमें यकीन है कि तुम हमेशा पाकिस्तान के लिए कामयाबियां हासिल करोगे और पाकिस्तान के लिए एक नेक शगुन साबित होगे। हम उम्मीद करते हैं कि तुम समंदर की लहरों पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम इज्जत व एहतराम और वक़ार के साथ सर बुलंद रखोगे। हमारी दुआ है कि इस कौमी फरीज़े की अदायगी में अल्लाह ताला तुम्हारा हामी और नासिर हो। आमीन। PNS 3 खैबर की लॉन्चिंग तकरीब है और पाकिस्तान के लिए ये यकीनन एक नेक शगुन साबित होगा। PNS खैबर की लॉन्चिंग के मौके पर दुआया कलिमात से उसका इफ्तिताह किया जा रहा है और ये मनाजिर हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहाज़ को पानी में उतार रहे हैं। ये लाइव मनाजिर हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं इस्तांबुल शिपयार्ड से PNS खैबर के। Levent oğluyuz. Via Demirşan bizim. Kalyonlara yön veren kutlu rüzgar geliyor. PNS 3 खैबर को कामयाबी के साथ पानी में उतार दिया गया है। लॉन्चिंग तकरीब इस्तांबुल शिपयार्ड के लाइव मनाजिर जो आप देख रहे हैं, दोनों ममालिक के परचम इस जहाज में आवेजा हैं। ये महज परचम ही नहीं है, tören ana objeleri takdim edilecektir. ana objeleri alın terleriyle बल्कि इस बात की gemilerimizin भी गमाजी करते inşasında ve हैं कि idaresinde दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं और ये समंदर की वसतों में उतरने वाला ये जहाज यकीनी तौर पे पाक बहरिया की सलाहियतों में मजीद निखार लेकर आएगा, मजीद जिद्दत लेकर आएगा। और दोनों ममालिक जिस तरह से माजी में एक दूसरे के साथ दिफाई ताउन में पेश रहे हैं, आगे जाकर मुस्तकबिल में भी दोनों ममालिक इसी तरह एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद वसत देते रहेंगे। ये मनाजिर हैं, इस वक्त आप देख सकते हैं सदर रजब तैयब एर्दोगान को इस्तांबुल शिपयार्ड के ये मनाजिर हैं। तीसरे PNS खैबर की लॉन्चिंग कर दी गई है, इफ्तिताह उसका कर दिया गया है। वज़ीर आज़म खुसूसी तौर पर
इसमें मौजूद थे और सदर रजब तैयब एर्दोगान की खुसूसी दावत पर वज़ीर आज़म तुर्किया में मौजूद हैं। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया, उनकी आमद का, बरादराना ताल्लुकात जो है उस हवाले से भी उन्होंने अपने खिताब में बात की और दोनों मालिक के ताल्लुकात को तारीखी भी करार दिया है। तीसरे PNS खैबर का इस्तांबुल शिपयार्ड पर कामयाबी से इफ्तिताह के बाद उसे कामयाबी से पानी में उतार दिया गया। इस वक्त ये मनाजिर आप देख रहे हैं। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी को तीसरे PNS खैबर का मॉडल भी दिया गया है और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खसूसी तौर पर इस तकरीब में मौजूद हैं। आज तारीखी ताल्लुकात का एक अजीम दिन है। तीसरे PNS खैबर का इस्तांबुल शिपयार्ड पर बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया है और कामयाबी के बाद तीसरे PNS खैबर को पानी में उतार दिया गया है। इस्तांबुल शिपयार्ड के ये मनाजिर, वज़ीर आज़म को तीसरे PNS खैबर का मॉडल भी पेश किया गया और वज़ीर आज़म के साथ वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं। दोनों ममालिक की कुर्बत का आकाश है, दोनों ममालिक की जो ताल्लुकात रहे हैं, दिफाई ताउन जिस तरह से दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ करते रहे हैं, उसी की आज अक्कासी है कि PNS 3 की लॉन्चिंग तकरीब हुई है और कामयाबी के साथ उसको पानी में उतार दिया गया है। 2018 में इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया, इसका आगाज़ किया गया था, जिसके तहत पाकिस्तान ने भी तुर्किया से मिल्जम क्लास के 4 जहाज़ लेगी, ऐसा इस मुआहिदे में तय पाया था। और इस जहाज़ की अगर हम बात करें, पहले भी हमने आपसे जिक्र किया कि बेपनाह सलाहियतों का मालिक ये जहाज़ है। जिस वक्त आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें इस्तांबुल शिपयार्ड की ये मनाजिर, PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के हमरा मौजूद, सदर रजब तैयब एर्दोगान की खुसूसी दावत पर वज़ीर आज़म यहाँ पर मौजूद हैं। PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब में इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुश्तरका तौर पर इसका इफ्तिताह किया है और समंदर की वसतों में उस जहाज़ को उतार दिया गया है, जो कि गमाजी करता है दोनों ममालिक की कुर्बत को, दोनों ममालिक के दरीना ताल्लुकात को, बाहमी ताल्लुकात को और बाहमी एतमाद को। इस वक्त वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर के साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा के हमरा उनकी यहाँ पर आप मौजूदगी को देख सकते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद हैं, सैयद नवीद कमर भी मौजूद हैं और तारिक फातमी भी इस तकरीब का हिस्सा हैं और इसरार तरीन भी इस तकरीब में मौजूद हैं। दोनों ममालिक की ताल्लुकात की एक बेहतरीन मिसाल है जो इस वक्त हम आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म मौजूद हैं और फ़र्दन मुलाकात कर रहे हैं, सबके साथ घुल मिल गए हैं और बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ख़ुसूसी दावत पर तुर्किया में मौजूद हैं और एक अहम प्रोजेक्ट मिल्जम प्रोजेक्ट, इसके तीसरे जहाज़ को पानी की वसतों के सुपुर्द कर दिया गया है और 2018 में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कामयाबी के साथ दोनों ममालिक के माबैन जारी है। इस जहाज़ को की अगर हम बात करें तो बेपनाह सलाहियतों का मालिक ये जहाज़ है और 29 नॉटिकल माइल की रफ्तार है इस जहाज़ की, 2400 टन सलाहियत रखता है। कैपेसिटी के लिहाज से रडार से भी इसको छुपाया जा सकता है। यकीनी तौर पे पाक बहरिया की जो दिफाई सलाहियतें हैं उसमें मज़ीद निखार लेकर आएगा, मज़ीद जिद्दत लेकर आएगा और दोनों मालिक दिफाई ताउन को इसी तरह से जारी रखेंगे। इसी की ये अक्कासी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। PNS खैबर की इफ्तिताही तकरीब जिसका आगाज़ कर दिया गया है, तीसरा जहाज़ था जिसका इफ्तिताह कर दिया गया, उसको पानी की वसतों के सुपुर्द कर दिया गया है। इससे कबल पाक बहरिया के लिए पहले कोविड PNS बाबर की जो लॉन्चिंग तकरीब हुई थी 2021 में मुनक्किद की गई थी, अगस्त था और ये तकरीब भी इस्तांबुल ही में हुई थी। दूसरे जहाज़ की बात करें तो PNS बदर का संग बुनियाद मई 2022 में रखा गया, लेकिन वो पाकिस्तान कराची में था और आज ये तीसरा इसी का एक कड़ी है। इस्तांबुल शिपयार्ड में ये तकरीब मुनक्किद की गई है, तीसरे PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब जिसका इफ्तिताह किया
दोनों रहनुमाओं ने, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने। सदर रजब तैयब एर्दोगान यकीनी तौर पे इस वक्त और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त इंजीनियर्स के हमरा मौजूद हैं। उस टीम की काबिशों को सराह रहे हैं, उसके अज़्म हौसले को सराह रहे हैं जिन्होंने दिन रात एक किया है इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए और अपनी मेहनत पूरी तरह से वसूल की है। जिस अंदाज में हम आज इस जहाज़ को देख रहे हैं, उनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं और उनको सराह भी रहे हैं उनकी काम के सिलसिले में। ये वो जहाज़ है जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों ममालिक के परचम इस पर आवेजा हैं जो कि यकीनी तौर पे इस बात की अक्कासी करते हैं कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ हैं, ना सिर्फ कड़े वक्त में बल्कि ना सिर्फ आजमाइश में, कड़े वक्त में, बल्कि जब बात हो दिफा की, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को आगे लेके जाने की, खित्ते में अमन की, खित्ते में इस्तेहकाम की और खित्ते में तनाज़ात की हल की भी, तो दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ हैं। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। शिपयार्ड में दोनों रहनुमा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मौजूद और ये वज़ीर आज़म की रवानगी के मनाजिर हैं।